Hi Vasundhra, how are you? Hi, I'm good. I hope you're doing good too. Yes, I'm also doing good and congratulations for your AIR-1 in SSC Tech 30. Thank you so much. So Vasundhra, how's the feeling? कैसा लग रहा है after AIR-1? Like you have started as a normal aspirant, right? आपने भी एक normal aspirant के तरह सफर start किया. You also face failures, right? चाहे वो screen out हो, दूसरा failure, right? उसके बाद 4 बार आप लगातार recommend हुए, तो कैसी फीलिंग है अभी? See, once you start getting recommended, you know already you have it in you. बात फिर merit की आ जाती है. So last time in SSC Women Tech, electrical, I was ranked 2. So I knew when I had seen the merit list that next time I have to be 1. There's no other way around. Okay, so I have to give my best attempt. But between SSC Women Tech 29 and 30, I had 2 more SSBs. और उसकी वजह से आई थिंक माई स्किल्स शार्पन मोर. वहाँ पे रिकमेंडेशन के बाद मेरे को और कॉन्फिडेंस आ गया. आई थिंक द लास्ट अटेम्प्ट वाज द बेस्ट अटेम्प्ट आउट ऑफ द 4. मतलब इट वेंट ऑन इम्प्रूविंग. So yes, it is a great feeling that finally, there has been a screen out, there has been a conference out, and then gotten recommended for merit out viewer. There have been continuous failures like 3 times, and then after all these 3 things, you're getting finally that, the AIR-1. It's good. It's an achievement all in all. का इंतजार था, the moment that you were waiting for that finally came, right? Yeah. Okay, so basically when you got merit out, right, for the first time you got merit out for the SSC Tech, right? The SSC Tech 29. And then if I will be talking about the second time, you also faced the merit out in CDS entry also. Yeah. Right. So how you kept yourself motivated? What was the source of your motivation basically, even after getting merit out? So the source of motivation has always been my self-belief. When I had seen the merit list of SSC Women Tech 28, and I had seen there is no girl in electrical, I knew in the next list there will be my name. But I had forgotten to mention to myself it should be AIR-1. Now in SSC 29, SSC Women 29, there was my name in the merit list. However, it was AIR-2. But since recommendation hote ja rahe the, I knew I had it in me. I just have to give my best attempt, and I have to stay grounded and humble and just do my thing, right? So फिर से मैंने वही perform किया and I got recommended again. Okay. So इस बार मुझे I had this feeling that I kind of knew that I will be AIR-1. So it's something a manifestation भी काम करता है. Yes, you work in that. Exactly. तक हम नहीं सोचेंगे ये कि like we can do that, तब तक तो हमारे लिए कोई भी नहीं कुछ कर सकता. Whether we are going anywhere, no one is going to help us, right? So Vasundhra, पहला question. As per I know you that April 2021 से we are in contact, right? Since April 2021. तो तब जिस वसुंधरा को मैं देखता था, वो वसुंधरा जो सेशन में आती थी पीपीडीटीज के, जीडीज वगैरह के, तो उस टाइम पे एक वसुंधरा का होता था जब भी वो पार्टिसिपेट करती थी किसी जीडी में या पीपीडीटी की जीडी हो, आइदर नॉर्मल जीडी हो, तो एक जल्दी से तुरंत वायलेंट हो जाती थी, राइट? थोड़ा सा दिखाती थी कि हाँ कि यस आई एम डोमिनेटिंग इन द ग्रुप. और अब अगर वसुंधरा की बात करूं तो वसुंधरा काफी शांत हो चुकी है. तो हाउ यू वर्क ऑन दैट? See, I think I have not worked upon that. The SSBs, that experience has worked upon me. So once you go to the SSB, that realization comes how you have to conduct yourself. तो उससे मैंने feedback लिया, अपने ऊपर काम किया, थोड़ा analyze किया, है ना, और उसे improve किया. मुझे पता था I have to be more balanced in my approach. Abhi bhi I give very legit points and everybody becomes quiet when I speak, but it is in a very honorable way. It never turns violent and people actually accept for speaking, like they listen to me, they genuinely listen to me. So that art I have acquired like in the last year, and that is due to like my continuous introspection. जैसे मैं फर्स्ट टाइम मैं स्क्रीन आउट हुई थी, so तभी मेरे को रियलाइज हो गया था, आई हैव टू बी अ बिट मोर अजाइल इन द जीडी,
that is only when people will hear me. When people feel that I am listening to them, I am empathetic to them, then they will listen to me. So I think all this realization and introspection helps a long way. Okay, so basically आप ये कहना चाह रहे हो कि इंट्रोस्पेक्ट करना कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज्यादा जरूरी है हर इंसान के लिए, कि ये मैटर नहीं करेगा कि वेदर यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ नॉलेज, आपको कितना ज्यादा ज्ञान है, वो मैटर नहीं करेगा. मैटर ये करेगा हमेशा कि हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ, एंड दैट यू हैव फेल्ट इन योर प्रीवियस इंटरव्यूज, राइट, कि जहां पे आपको लगा कि कहीं ना कहीं उस चीज पे वर्क करने की मुझे जरूरत है. ओके, सो वसुंधरा, नेक्स्ट क्वेश्चन. आपने देखा होगा बहुत सारे टेलीग्राम पे ग्रुप्स बन रखे हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बन रखे हैं एस्पायरेंट्स के, राइट. तो वहां पे आपने देखा होगा लोग कंटिन्यूअस 365 डेज एसएसबी की प्रैक्टिस करते हैं विद द वैट वर्ड्स, विद द एसआरटीज एंड ऑल. तो क्या आपने भी 365 डेज कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की, ऐसे कुछ एसआरटीज की, वैट्स की? या कई लोग ऐसा भी मैंने देखा है कि जनरली वो पूछते हैं ग्रुप्स में आके कि व्हाट वाज द पीपीडीटी पिक्चर, व्हाट वाज द टैट पिक्चर ओवर देयर इन दैट पर्टिकुलर बोर्ड. इस बोर्ड में क्या टैट की पिक्चर्स थी, क्या थी? डू यू थिंक finding about the PPDT pictures and the GD is like a waste of time, because then you start going with the preconceived notions and it really is detrimental to your performance. And like for example, I had done my preparation अच्छे से, मतलब कर ली थी मैंने, but again you have to revise once you have to go to the SSB and the date comes. So I keep a span of 15 days जिसमें कि मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ. I make a chart और उसमें अपने सारे टास्क लिखती हूँ और डेट लगा लेती हूँ कि मतलब जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मेरे 25th को है SSB, तो मैं 10th से रोज बना लूंगी, 10th 11th 12th till 24, ठीक है. एंड इन द कॉलम्स बना लूंगी, एंड इन द रोज आई राइट ऑल द टास्क आई हैव टू डू. फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस 1 वैट सेट, ठीक है, एंड ऑल्टरनेट डेज और लाइक प्रैक्टिस 3-4 टैट सेट्स. एंड आई थिंक कभी कभी कंप्लीट भी नहीं होते वो सारे टास्क, ठीक है, पर डे. बट अगेन इट ऑल्सो गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि तुम्हारे पास सब कुछ अकाउंटेड है और तुम्हें पता है कि तुमने कितने टैक्स प्रैक्टिस कर लिए हैं. सो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होनी चाहिए. आई डोंट थिंक यू नीड 365 डेज, ठीक है, 15 दिन एक बार आप रिवाइज कर लो, इट विल डू. सो आई हैड माई चार्ट कि मतलब कमांड टास्क का जो मैं डायलॉग बोलती हूँ, आई इवन यूज्ड टू प्रैक्टिस दैट डेली. लाइक once जब सबसे पहले when I get up, सबसे पहले मैं बोलती थी one task is completed, let's move on to the next. 15 मिनट बैठ के, like how much time does it take? 20 minutes, it's not much. 5 kilometer and tick mark, like that. ऐसे होते थे मेरे. So I used to complete almost all those tasks. Right, the schedule matter. कहने का मतलब 365 days practice नहीं चाहिए. Whenever one is having SSB, AFSB, NSB, whatever it is, तो उससे पहले अगर इंसान 15 दिन भी अगर अपना एक शेड्यूल मार्क करके कि हाँ मुझे ये टास्क करने हैं, वहां पे इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है, तो जस्ट वो आपने की प्रेफर, राइट? अच्छा वसुंधरा, in my last attempt I did not get the time to do that also. I had just come from Allahabad after my medicals. I came back on 6th July. I had my SSB again on 13th July. So I had to leave on 11th. I merely had 4 days to like do my packing and stuff. तो पढ़ाई का भी इतना टाइम नहीं मिला था. I did not practice my tats. So जो मेरी पुरानी प्रैक्टिस थी वही काम आ गई. And तो बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक बार प्रोसेस से अच्छी तरह गो थ्रू हो जाते हो तो आपको रोज रोज वो चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है. जस्ट आपको एक ब्रश अप करना होता है अपने आप को जब भी आपके SSB आ रही है. At the end of the day, SSB is about the personality. So personality is something that does not change. That has been told to me by my assessor himself in Bangalore. He told us that personality does not change. Performance might change due to the events you face just before your SSB. So the personality won't change, right? तो तुम प्रैक्टिस करके जाओ या नहीं करके जाओ, once हाँ थोड़ा सा you should know it, because इतनी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए प्रोसेस की, that go through the process, एक दो बार प्रैक्टिस करके चले जाओ. But I don't think you need to write tats every day, because then you will have preconceived notions. Yes, exactly. That's what I used to say also.
कि इस चीज की पर्सनैलिटी की कोई ऐसा नहीं है कि आप रोज रोज वो चीज करो, ऐसा कुछ नहीं है. वट एवर यू आर हैविंग इनसाइड यू, दैट विल बी ऑलवेज, दैट इज फॉर एवर. इट्स जस्ट नीड अ ब्रश अप, कि जब आपको उस चीज की जरूरत है, वहां पे आपका टाइम आ गया, तो समय से पहले आप अपने हथियार को तेज कर लो कि हाँ अब आपको जंग में जाना है. राइट. बाकी फिजिकल थिंग्स यू हैव टू कीप अप बिकॉज वो तो मेंटेनेंस चाहिए होती है. यस, दैट इज ऑब्वियसली. दैट इज तो रेगुलरिटी इज रिक्वायर्ड इन दैट. यस यस. ओके वसुंधरा, एक और चीज, काफी लोगों को मैंने देखा है कि वो लेक्चरेट के टॉपिक्स बोर्ड वाइज पूछते रहते हैं, इसमें क्या आया, इसमें क्या आया. तो डू यू थिंक कि ऐसे बना के कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप लोगों से पूछ के गए कि लेक्चरेट के तुम्हारे क्या टॉपिक्स आए, और सेम टॉपिक्स यू गेट इन योर लेक्चरेट? नहीं. इनफैक्ट इन माय लेक्चरेट इन बैंगलोर जिसमें मेरा रैंक 1 आया है, उसमें आई हैड माय लेक्चरेट टॉपिक्स वर I was absolutely clueless about all four of them. So I chose the organizational behavior one, जिसमें वो साइकोलॉजी का कोई टॉपिक है. People have told me, मुझे नहीं आता था. I spoke on it and in fact I stopped before 2.5 minutes also. And then also, I was complimented in a way by my assessor also. CTO did compliment me when he called me for the command task. He complimented me in a very good way. So I don't think lecturate is a very tertiary thing. Like he's just checking your mental stamina. Can you speak for 2.5 minutes? Like for example, I did not know a thing about the topic, still I was able to speak 10 minutes less than the 2.5 minute thing. Sorry, 10 seconds. So it's a very tertiary thing. You don't need to bother yourself and watch yourself up for that. मतलब इसकी वजह से प्रेशर में आके अपने एसएसबी खराब करना is wrong. People tend to do it a lot कि हम लेक्चरेट में क्या करेंगे. यस, मैं भी करीब करीब 2 साल से आई हैव बीन सीइंग दिस. जब मैं एस्पिरेंट फेस में था तो भी, आज मैं मान के चलो मेंटर फेस भी अगर एंजॉय कर रहा हूँ, उसमें मैं देखता हूँ काफी लोग इस चीज को लेके रहते हैं, लेक्चरेट में क्या करें, कैसे करें. और कई बार तो मतलब आपको भी पता होगा कि वहम है, बहुत सारे मिथ्स हैं यहाँ पे, दैट पीपल यूज टू से कि अगर आप फर्स्ट 2 टॉपिक्स में से अगर चूज करोगे तो आपको अच्छा माना जाएगा, अगर आप तीसरा चौथा टॉपिक लोगे तो आपको बुरा माना जाएगा. हैव यू एवर फेल्ट दैट? There is nothing like that. So बस मैं वही कह रही हूँ कि एक होता है प्राइमरी टेस्ट जैसे पीजीटी, जीडी और आपका जीपीई. एक होता है सेकेंडरी और टर्शरी. जैसे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं वो टर्शरी होते हैं और आपका लेक्चरर टर्शरी होता है. यू जस्ट हैव टू परफॉर्म. मतलब यू डोंट mess up in that. That is it. That is only required. ठीक है. You don't need to have your best performance in that. ऐसा कुछ नहीं है. This is a myth. और मेरे हमेशा चारों बारी नए टॉपिक्स ही आए हैं एंड believe me, no matter कितना भी find out कर लो, you will get something different in the lecturate. So it is absolutely just useless to prepare for lecturate अलग से. और उसकी वजह से तुम और चीजें कॉम्प्रोमाइज करो तो तुम अपने प्राइमरी जो टेस्ट है उन पे इतना फोकस नहीं कर पाओगे. तो और वसुंधरा के कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो होती हैं प्राइमरी नहीं होती. दिस इज ऑल अबाउट कि आपका वे मैटर करता है, कैसे आप लेक्चरेट में बोल रहे हैं, आपके पास क्या अपनी क्रिएटिविटी क्या है, आपके पास पहले से गैदर की हुई उस चीज के बारे में क्या नॉलेज है. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू देयर, राइट? The only line I have ever followed in my SSBs is all the assessors are not looking at the answers you answer nicely. They are looking at the way you deal with the answers you don't know. So अगर तुम फील्ड में हो और जवान तुमसे आके पूछता है कोई सवाल जिसका तुम्हें जवाब नहीं पता, तो तुम ऐसे कैसे डील करोगे उससे कि उसका तुम अपने लीडर से कॉन्फिडेंस भी लूज ना हो. ठीक है. एंड यू ऑल्सो कन्वे टू द पर्सन दैट यू डोंट नो इट, राइट? लाइक wait, I will check back and get back, या something like a positive response जिससे कि तुमसे कॉन्फिडेंस ना हटे लोगों का. Because people are relying on you when you are an officer, you're a leader in a role, like for example going to the front line. ठीक है. वहां पे लोग are like totally on you. So they want to check your mental stamina, your thing as a leader, कि तुम उस चीज को कैसे डील करोगे जो तुम्हें नहीं आती. और the only thing yes I tend to do is for lecturate and GD वगैरह, yes I keep up with the current affairs. That is really important. If something
in the lecture it comes from current affairs, it is good if you take that topic, you know, it gives a good impression. It is like इसकी वजह से आपका recommendation नहीं होगा, but हाँ, it is like the icing on the cake, a good icing on the cake, right? Okay, तो वसुंधरा के कहने का मतलब ये है कि बाकी सारी तो देखो चीजें, that is all about our experiences, whatever we are reading for a long time, जो चीजें हम करते आ रहे हैं वो तो हमारे पास नॉलेज होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स की नॉलेज, वो भी अगर डेली वे में, नॉट एक दिन में. आपको भी पता है एक दिन में हम 2 महीने 3 महीने का करंट अफेयर से अपडेट नहीं हो सकते. इट्स ऑल अबाउट कि अगर आपका कीन इंटरेस्ट है उस चीज में, तो आप डेली बेसिस पे अगर न्यूज़पेपर भी रीड कर रहे हो, आपको पता है आपके देश दुनिया में आसपास आपके क्या हो रहा है, तो दैट इज गुड इनफ. उससे ज्यादा कुछ स्पेशल करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, सो वसुंधरा, अब बात करते हैं कि लाइक आप आते थे शुरू में भी आप आते थे सेशंस में, राइट? और एक टाइम आया था कि जिस टाइम पे आई रिमेम्बर वेरी वेल व्हेन माय एसएसबीज वर ओवर एंड आई हैव जस्ट क्विटेड कि नहीं, मुझे अब सेशंस ऑर्गेनाइज नहीं करनी, चीजें नहीं करनी. So that time only Vasundhara was there who started keeps on saying कि नहीं, if things are going into a good manner, recommendations आ रही हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, चीजें चल रही हैं, तो you were the one who motivated to do so, right? तो और कहीं ना कहीं आप एक constant member भी थे. 6 महीने से सेशंस में आप आते थे, कुछ हो ना हो तो आप कुछ भी टाइम से अपने शेड्यूल से टाइम निकाल के आप आते थे. तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब कितनी हेल्प थी वो जो सेशन जब भी आपके एसएसपीज होती थी, आते थे? I think the sessions add consistency to my preparation. Like jaldi se you just agar jaise, even if you're sleeping till late, but no, you know by Shivam ki class hai 8 baje, you will get up quickly and just open the laptop and start your PPTT. That is the first thing you're doing in your day, and it really creates an impact. है ना कि आप consistency is very important. You know, intelligence comes afterwards. Consistency बहुत आई मेरी when I used to practice in the group daily. So एक PPTT तो रोज होती थी हमारी ग्रुप में, तो उसकी वजह से मेरी स्पीड इतनी बन गई. Like I just have to see the picture for like 5 seconds and I have a good story in my mind. And then फिर एक ये होता था ना कि ग्रुप में है तो आप बाकी बच्चों की परफॉर्मेंस भी देखते हो, तो आपको समझ आता है, कभी कभी आपको उनसे अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं उनकी स्टोरीज देख के, और कभी कभी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो. सो इट गोज अ लॉन्ग वे. इट आल्सो हेल्प्स यू have a good group dynamics. You're able to connect more with people, and I think I have connected with a very good lot of people in through the group, really motivating people. Also, so it goes along. When I have quitted the idea of having the regular session, that time we were having around 20 recommendations, right? And if you will look now, that is almost 45 plus. Even I don't count that, but it's just a rough idea that yes, that much of recommendation have been there, right? जिसमें 4 तो वसुंधरा की हो गई, right? Okay, वसुंधरा, एक चीज और, like you have done BTech, right? आपने BTech किया है and you are pursuing MTech. Yeah, I had cracked my GATE examination and I was pursuing MTech, but I left it after 1 semester because I realized this is not my thing. I don't have to do it right now, and I want to devote myself solely to my defense preparation. So I took a calculated chance, and it was always asked to me in the interviews, like, why are you not doing your job? Why are you not doing anything? I purposely did not take a job after my BTech because I kind of knew what I wanted to do. Okay. So मैंने बस पूरा अपना whole soul उसमें लगा दिया, because you know 21 to 24 is the common age for all the examinations, and if you have the right faculties, like मतलब अभी आपको जरूरत नहीं है, so you can take a risk and you can invest your time into something you actually want, you're passionate about. MTech तो हो जाती फिर से भी, है ना? So basically हमारी एक बार डिस्कशन भी हुई थी इस बारे में, when we had a mock interview हुआ था, उसमें डिस्कशन भी हुई थी कि मतलब क्या है आप नॉट हैविंग जॉब, राइट? उसके बाद डिस्कशन हुई थी. तो कहने का मतलब ये है कि सवाल आपसे पूछे जाएंगे, बट यू शुड बी क्लियर कि व्हाट एग्जैक्टली यू डिड, कि आपने क्यों नहीं की. अगर क्यों नहीं की तो देन यू माइट बी हैविंग अ रिजल्ट ओवर देयर, राइट? Yeah, in all my interviews I was asked this question, why did you not take a job?
So I told them I was a training and placement coordinator of my college. So it is very easy for me like to say कि कहीं से मेरे को job मिल जाए. It is quite easy because I have been in touch with various HRs of companies and stuff like that, and I have helped my juniors also. ठीक है, and I have myself interned in microprocessor industry, and I have been a very good student also. I have a 90 percentage in my engineering, so it is not difficult for me. If I have left something and I've gone totally like I did not take up a job and went for my preparation, so I must be having a certain level of confidence that मैं कर सकती हूँ. So I just tell them that I can take up a job any day. Like I just need to brush up my skills. Like 2-3 months पढ़ाई करूँगी and I'll just give interviews and I'll पक्का take a job. It's not a big deal. ठीक है. So and they actually used to test my technical knowledge. Like for example, in Allahabad, I was asked technical question for 20 minutes and I sustained it quite well. And इधर भी पूछे थे बैंगलोर में, हमेशा I sustained it because मैं पढ़ के जाती हूँ. There are very काफी predictable questions होते हैं. इंटरव्यूज में काफी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन. इन शॉर्ट वसुंधरा के अगर वर्ड्स में अगर ये कहें तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि तुम्हारे इंटेंशन क्लियर होने चाहिए कि अगर तुमने जॉब नहीं की या नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे. ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें जॉब मिली नहीं. और अगर तुम वाकई अगर सिर्फ एक प्रेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि तुम्हें एक डिफेंस एस्पिरेंट की तरह प्रिपेयर करना है, उसमें ही जाना है, तो वो चीज तुम्हें दिखानी पड़ेगी कि हाँ मैंने ये एग्जाम क्लियर कर रखा है, मैंने ये भी एग्जाम क्लियर किया, कि वाकई जिस चीज के लिए तुमने अगर ब्रेक ले रखा है अपने जॉब से अपनी बाकी चीजों से, दैट यू मस्ट शो देयर इन द इंटरव्यू. और बाकी तुम्हारा अपना सब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए. राइट. ओके, सो अब तो काफी फैमिली में भी बहुत अच्छा माहौल होगा. आंटी अंकल एवरीवन माइट बी हैप्पी कि हाँ वसुंधरा हैज अचीव्ड समथिंग ग्रेट. Yeah. Okay. The last time I was AIR-2 and was not going to the academy, my mother for the first time she said, "Kash tum beta hoti." Yes, it happens actually. And really I appreciate the parents who are also supporting the girls as the male child. Right. And काफी अच्छी चीज है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है. इवन जहाँ तक मुझे भी जितना लगता है, जितना I know about you, काफी अच्छी सपोर्टिव फैमिली लगती है, सपोर्ट करती है. Very supportive, very supportive. In fact, I would also like to give credit to my friends. Yeah, exactly. They are my extended family only. Okay, Vasundhara, so it was very nice to talk to you. Hope that सभी को काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी, काफी सारा इंसाइट मिलेगा लोगों को कि एग्जैक्टली क्या चीजें आपके लिए वर्क की. बेसिकली देखो ये तो अप टू पर्सन होता है, चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन हाँ एक जो मेन अप्रोच होती है वो कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट के लिए सेम होती है. राइट. चलो वसुंधरा, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे. होप टू सी यू सून इन द ऑलिव ग्रीन्स. ओके वसुंधरा, Thank you so much.